A true leader does not compete for leadership positions. He or she simply outshines because of his or her qualities. This is our leader. This is our head boy. This is our head girl. Because Allah has the best plan for you. Allah has the best plan for you. If in this school we do not study properly, then we will never ever be able to do anything for our community. Do we want to be an idol for the world? We are not contributing anything to the society. Hence the society is throwing us away. You are the future. A true leader does not compete for leadership positions. He or she simply outshines because of his or her qualities. So what you need to do is you need to work hard on acquiring the leadership qualities. That's it. You need to work hard on acquiring the leadership qualities. That's it. And once you've acquired the qualities, your classmates, your teachers, your faculty, your management will stand up and say that this is our leader, this is our head boy, this is our head girl. And if you've not been chosen as the head boy, not been chosen as the sports captain, you don't need to be sad. You need to keep working hard for the next opportunity that Allah subhanahu wa ta'ala will give you, inshallah. Never be sad because of what you never got. Because Allah has the best plan for you. Allah has the best plan for you. MashaAllah, I was visiting your campus. You have an amazing campus. Do you agree with me? You have an amazing campus. You have a beautiful campus, beautiful classroom, beautiful set of teachers, beautiful set of management. You have horse riding in the school. That is, I would say that you're privileged enough to be studying in such a school. But at the same time, now listen to me. But at the same time, remember, the vast section of the Muslim community is in a pathetic condition, is living life in poverty. They do not have food to eat. Their children cannot go to school. When they fall sick, they do not get medicine. There are children who die on the footstep of the hospital. So the question is, what are we doing for them? And what do we plan to do for them? If in this school we do not study properly, then we will never ever be able to do anything for our community. There is such a rise in Islamophobia. There are people who hate us, who hate people, who hate to see Muslims wearing cap, who hate to see girls wearing hijab. How are we going to counter them? How can we become an idol for them? Is the question. Do we want to be an idol for the world? Do you want people to respect us? So what do we do when we want people to respect us? Yeah? You become contributors of the society. Now supposedly you have a broken chair in the classroom that does not contribute to the classroom. You have a broken chair in the classroom that does not contribute to the classroom. What do you do with the chair? You throw it away. The same is the condition with us. We are not contributing anything to the society. Hence the society is throwing us away. The society is kicking us away. The society does not respect us, does not love us. Because what are we giving to the society? Are we giving anything? Do we have innovators? Are we discovering something? Are we innovating something? Are we writing good books? Are we contributors of the society? The answer is no. The answer is no. But it is in our hand. And Prince EA is a very famous motivational speaker. He says, do not look at youth as 20% of the population. Rather look at them as 100% of the future. You are the future. आप मुस्तकबिल हैं. और अल्लाह ने आपके कंधों पे जिम्मेदारी दी है कि आप इस कम्युनिटी के हालात को बदलेंगे और आप इस मुल्क के हालात को बदलेंगे. And you will bring back the lost respect that we once had. और आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह पकड़ेगा आपको. अल्लाह पूछेगा कि क्या किया तुमने. I had given you such an amazing auditorium. You had such a beautiful classroom. You had books, you had food, you had horses, you had football, you had everything that you needed. I gave you everything that you needed. What did you give me?
What did you do for my community? रसूल अल्लाह पूछेंगे आपसे कि क्या किया तुमने मेरी उम्मत के लिए? How many of us love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? This is beautiful hadith. अल्लाह के रसूल ने कहा, none of us can be people of faith. हम में से कोई ईमान वाला तब तक नहीं हो सकता जब तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बाप माँ से ज्यादा, अपने जानने वालों से ज्यादा, भाई बहन से ज्यादा, दोस्तों से ज्यादा मोहब्बत ना कर ले। उन्होंने बता दिया कि हम में से कोई भी ईमान वाला तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अल्लाह के रसूल से अपने बाप माँ से ज्यादा मोहब्बत ना करें, अपने टीचर से ज्यादा मोहब्बत ना करें, अपने दोस्तों से ज्यादा मोहब्बत ना करें, अपने भाई बहन से ज्यादा मोहब्बत ना करें। हम में से कितने लोग अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत करते, बाप माँ से ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं? हाथ उठाइए। करते हैं तो माशाअल्लाह, नहीं करते तो आज से अहद करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह के रसूल हैं। The only ideal person that we have in life is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's it. That's it. And there are people, I have met such people, जो अल्लाह के रसूल का नाम सुनते हैं उनकी आंखें नम हो जाती है, उनकी आंखों से आंसू आ जाती है। वो तरसते हैं कि अल्लाह के रसूल तो कब अपने ख्वाब में देखेंगे हम, कब अल्लाह के रसूल से मुलाकात होगी हमारी। When can we meet a prophet? When can we see him? When can we talk to him? When can we see him in a dream? पूरी जिंदगी काट देते हैं इस दुआ में कि अल्लाह के रसूल को मुझे अपने ख्वाबों में देखना है। This is the level of love when we have for Prophet Muhammad. Only then can we bring change. Only then can we bring change. It is only the love of Prophet जो हमें गुनाहों से रोक सकता है। Only the love of Prophet जिसकी वजह से हम अच्छे काम कर सकते हैं। अगर नबी की मोहब्बत दिल में नहीं है तो हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। The only ideal person that we have in our life and we should have is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's it. There is no bigger name than that. The only ideal person. So the question again comes back: do we love our Rasul? Do we love our Rasul? Do we want to see him in our ख्वाब? अपने सपने में देखना है, ख्वाब में उन्हें देखने का तरस है, हमारे तरफ है दिल में। क़यामत के दिन उनका दीदार करने का, उनसे मुलाकात करने का तरफ है दिल में। और मुलाकात पे क्या कहेंगे उनसे हम कि रसूलुल्लाह हमने जिंदगी ऐसी ही काट दी, हमने जिंदगी ऐसे ही काट दी। या फख्र के साथ सर ऊंचा करके कहेंगे रसूलुल्लाह हमने आपकी सुन्नतों को हमने जिंदा किया था, रसूलुल्लाह हमने उम्मत के लिए ये किया, या अल्लाह हमने लोगों के लिए ये किया। रसूलुल्लाह क्या ले जाएंगे अपने रसूल के पास में? क्या ले जाएंगे बताइए? What are we doing today? हम अल्लाह से मुलाकात करेंगे तो अल्लाह के साथ क्या बात करेंगे? हम क्या बोलेंगे अल्लाह को? हमने क्या किया? हमने किताबें थी हमने, मगर पढ़ा नहीं हमने। We had everything that we needed, but what did we do? हम कॉमनर्स नहीं हैं। And I repeat this once again कि अगर कोई मैं मुफ्ती होता, मुफ्ती का काम है फतवा देना। अगर मैं मुफ्ती होता, जो कि मैं नहीं हूं, तो मैं सबसे पहला फतवा ये देता कि हॉलीडेज मुसलमानों पे हराम है, एंटरटेनमेंट मुसलमानों पे हराम है, आराम मुसलमानों पे हराम है फॉर द नेक्स्ट 50 years। सो हम आराम नहीं कर सकते। वी आर नॉट अ कम्युनिटी जो आराम कर सकते हैं। वी आर नॉट अ कम्युनिटी जो एंटरटेनमेंट के लिए हम चीजें ढूंढ सकते हैं। वी आर नॉट अ कम्युनिटी जो हॉलीडेज मांग सकते हैं मैनेजमेंट से। नो 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 नो। नेक्स्ट 50 years हम सिर्फ मेहनत और मेहनत और मेहनत करेंगे, सिर्फ। ओनली देन विल अ सिचुएशन चेंज। तो आप कॉमनर्स नहीं हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। We need to outshine and we should outshine. People should know us, people should respect us, people should love us because we are the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But what have we done? हमने क्या किया उस काम के लिए? कुछ भी नहीं किया हमने। तो हम उठेंगे फजर में और मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे और करेंगे और करेंगे आंख लगने तक
सोने तक हम सिर्फ मेहनत करेंगे, फिर उठेंगे फजर में और मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे और सो जाएंगे, फिर उठेंगे और फिर मेहनत करेंगे और फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे और फिर मेहनत करेंगे और मेहनत करते करते तब तक मेहनत करेंगे जब तक हमें कोई कब्र में ना उतार दे, इंशाअल्लाह। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूं ये, और बहुत ही फेमस ये एक कोट है कि जमीन पे काम और कब्र में आराम। और हर मुसलमान को ये अपना तकिया कलाम बना लेना चाहिए कि हम जमीन पे काम करेंगे और कब्र में आराम करेंगे। और आप कौन सा काम करेंगे? एज स्टूडेंट्स क्या काम है आपका? स्टडीज, दैट्स इट। नॉट जस्ट स्टडीज, वी डोंट वांट जस्ट एकेडमिक्स, वी वांट एकेडमिक एक्सीलेंस। We want toppers of Maharashtra. We want toppers of Aurangabad from Pearls Academy. We want toppers of India from Pearls Academy. This is our aim. We are not commoners जो बस पढ़ ले, नहीं। We are not commoners. We are not commoners. We are not commoners. We are here to outshine. That's it. Period. That's it. Now this is not a motivational speech that I am giving. ये मोटिवेशनल स्पीच ऐसे ही होता है, 2 दिन के लिए मोटिवेट होते हैं, and then we back to what we were doing. Now what do we do to stay motivated all the times? It is discipline. Discipline. Everything that you, और ये एक और चीज में सीख लें आप, anything that you want to do in life, the first thing that you do is write it down. The first thing that you do is write it down. तो आज मेरी स्पीच के बाद आपको कुछ भी ऐसा लगा है कि हमें जिंदगी में बदलना है, राइट इट डाउन। राइट इट डाउन ऑन द वॉल, राइट इट डाउन ऑन नोट पैड वेयर यू कैन सी इट एवरी डे। आप उसको निकाल के देखिए, रिमाइंड योरसेल्फ, ये मुझे करना है। आई वांट टू बी अ टॉपर, आई वांट टू बी द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर, आई वांट टू बी द बेस्ट फुटबॉलर। एंड एवरीथिंग दैट वी डू, इट इज फॉर रसूलुल्लाह एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दैट्स इट, नॉट फॉर आवरसेल्व्स, नॉट फॉर आवरसेल्व्स। When we do it for Rasulullah, then there will be no despair. फिर हम हार भी जाएंगे ना तो दुख नहीं होगा। जब अल्लाह के लिए चीजें करें ना, फिर हारने पे भी दुख नहीं होता है कि हम तो अल्लाह के लिए कर रहे थे। हार और जीत हमारी क्या है? हम तो अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे कैसे भी? It is not for me. I am not studying for myself. I am studying for Allah. I am playing for Allah. जब हार जाए जीत जाए, it does not matter. Because whatever you do, it is for Allah subhanahu wa ta'ala, for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. और सबसे बड़ी बात, as students, we are very young. हम झूठ नहीं बोल सकते। अल्लाह के रसूल ने कहा मुसलमान चोरी कर सकता है एक बार के लिए, मुसलमान ग़ीबत कर सकता है, मुसलमान कोई भी गुनाह कर सकता है, मगर मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, मजाक में भी झूठ नहीं बोल सकते हम। वी कैन नॉट लाई, वी कैन नॉट बी लायर्स। क्योंकि हम झूठ बोलते हैं तो हमें कामयाबी नहीं मिलती है। बिकॉज दैट अल्लाह इज वॉचिंग एवरीथिंग, ही इज आवर क्रिएटर, ही इज वॉचिंग एवरीथिंग, ही नोज व्हाट इज देयर इन आवर हार्ट, ही नोज व्हाट इज देयर इन आवर हार्ट। द CCTV is also not watching everything, but Allah is watching everything, everything, every second of our life. He knows everything that is going on in our heart. We can hide nothing from Him. So what is in our heart is the question. तो हम झूठ नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम झूठ नहीं बोलते होंगे, मजाक से भी नहीं बोलेंगे हम, थोड़ा भी झूठ नहीं बोलेंगे हम, थोड़ा भी झूठ नहीं बोलेंगे हम इंशाल्लाह। हम सच बोलेंगे आज से इंशाल्लाह, सच बोलेंगे इंशाल्लाह। और आखिरी बात वो ये कि मेरी जिंदगी में मेरे जितने टीचर्स रहे, जितने भी टीचर्स रहे मेरे, जिन्होंने मेरी जिंदगी में चेंज लाया है, चाहे वो क्लास नर्सरी में जिस टीचर ने पढ़ाया था मुझे और कॉलेज में जिस टीचर ने पढ़ाया था मुझे, आई एम इन टच विद ऑल माई टीचर्स, आई एम इन टच विद ऑल माई टीचर्स, आई मीन मोस्ट ऑफ देम हु हैव इम्पैक्टेड माई लाइफ। आई हैव सर्च्ड फॉर देम, मैं ढूंढ ढूंढ कर उनको निकाला हूं कि मेरी नर्सरी में जो मुझे ABCD पढ़ाया था, जिसने मुझे अलिफ बा ता पढ़ाया था, कहाँ है वो? ढूंढ ढूंढ के निकाला उनको मैं, फिर उनको दिखाया कि सर ये देखिए ये मैं हूं। वली अच्छा इतने बड़े हो गए, सर देखिए मैं क्या कर रहा हूं आज, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वली फिर जो उनके दिल से दुआ निकला कि ये बच्चा मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आया है, वो जो दुआ उस वक्त उनके दिल से निकला ना, उनकी जबान से निकला, वो अल्लाह इनकार कर ही नहीं सकता उस दुआ को। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि अल्लाह कहे कि आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस दुआ।
So respect your teachers. Respect your teachers. वो डांट दे, वो कुछ भी बोल दे, रिस्पेक्ट, सर झुका के, yes ma'am. Obedience to your parents and teacher is what is required and which is missing from today's in our generation. थोड़ी सी बात में हम नाराज हो जाएंगे टीचर से. How can you speak to me like that? How can you speak to me like that? Get out. I will not. Do we do that in the school? Do we have that culture in the school? I'm glad that we don't have it. But आज की generation, I'm shocked to see what is wrong with us. Teacher says go out means go out. Teacher says sit down means sit down. Teacher says stand up means stand up. We will not question the teacher. हम बस obedience दिखाएंगे. अल्लाह हमारी इस obedience को कबूल करेगा. And जब हम ऐसी obedience दिखाएंगे तो अल्लाह ऐसे teachers हमें भेजेगा. तो अपने teachers और अपने parents का हम respect करें इंशाल्लाह. Without respecting them, without loving them, without being obedient to them, we can go nowhere. कितनी भी कामयाब हो जाए हम, we can go nowhere. और मैं अक्सर कहता हूँ, और a lot of people might disagree with this. मैं कहता हूँ in the ocean of education, academics is just a drop. Is just a. The rest is tarbiyat. The rest is tarbiyat. I don't even say the half water is academics and the half water is tarbiyat. I say academics is just a drop. The rest is tarbiyat. Now what is tarbiyat? Tarbiyat is when a guest walks in, how do you behave in front of him? Tarbiyat is how do you do wuzu. Tarbiyat is how do you sit down. Tarbiyat is how do you walk. Tarbiyat is how do you stand. Tarbiyat is how do you look up. How do you talk to your classmates? How do you talk to a female? How does a female talk to a male? How does a girl talk to a boy? How does a boy talk to a girl? How does a teacher treat you? How do you treat your teachers? How do you drink water? How do you eat? How do you look at the world? How does the world look at you? Everything is part of tarbiyat. Are all of these as per the guidelines that has been made by Rasulullah? Then well and good. If not, then we need to rethink. Inshallah. I think that is sufficient enough. I mean, Sir, you said that our job is to work hard on here and be at peace, at rest in the grave. Said. So my question is, we have to work, but what do we have to work towards? Okay, great question, mashallah. What do we have to work towards? We have to work towards attaining the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the ultimate goal. But there are a lot of duties and responsibilities that we have while reaching that goal. Allah has assigned different duties for different people. Like I have a duty of running a school. I have a duty of serving my people. There are a lot of people जिससे Allah ने मुझे जोड़ा है, जो dependent है आज मुझ पे. My duty is to serve them. Serve them for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Now your duty as of now is to study hard. Now you studied hard, and then comes a point of time when Allah changes your responsibility. Allah puts you in a position, probably you might be a principal at some college, you might be you are writing a book I believe, and your book is also selling on Amazon, right? You might be reviewing books for people, or you might be teaching in some school. So at that point of time, you serve that in the best possible way. You make sure that you are honest in what you are doing. You 110% honest in what you are doing. You are not wasting your time. You are not dishonest. Now when you do that, people around you, they benefit from you. Coming back to what I said, you be a contributor for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Does that answer your question? Yes, sir. Thank you. Most welcome. You have a very sweet smile, mashallah. And you look like my younger brother, who is also writing a book, mashallah. Walaikum assalam. I actually have just one question. Yesterday only I was talking with my father that
he was saying me that today itself we will go and visit Wali Rahmani sir and will listen to him. And see my love, today only I met you in the morning only. And my question is, how you are managing deen and dunya? Okay. What is your age? I mean, what standard are you in right now? What standard are you in right now? 10? 10th. Mashallah. Too smart to be in 10th. Mashallah. Mashallah. Can we clap for her? Okay. How do we? Okay. What is there to talk? I heard that. Mashallah. No, I did not. Don't be scared. So yeah, the question is, how do we manage our deen and dunya? So there lies the problem, is that when we segregate deen and dunya, it is not a separate thing. Deen and dunya is not a separate thing. Islam is a way of life. So when Islam is a way of life, whatever you do is deen and whatever you do is dunya. So there is no separation. So what I am doing right now is my deen and is my dunya. When I am reading a book, a mathematics book, that is my deen and that is my dunya. Now how do I say that? So I'll give you just one example for that. For example, and I was supposed to say that in my speech tonight also, but let me tell you also. When a father dies, somebody's father die, उनकी विरासत है, तो उनकी विरासत में से तकसीम होना है बच्चों को और लोगों को. So whatever is left over, the father has left behind has to be divided amongst the children and the wives. So अल्लाह के रसूल ने एक फॉर्मूला बताया है कि as per this formula इसको डिवाइड करना है. तो अल्लाह के बताए हुए, अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पे जब हम विरासत की तकसीम करेंगे तो क्या ये दीन है? इज इट दीन? यस. तो जिस मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके हम विरासत की तकसीम करेंगे, क्या वो मैथ्स दीन नहीं है? क्या वो मैथ्स दीन नहीं है? ऑफ कोर्स वो मैथ्स भी दीन है, राइट? तो हमने सबसे बड़ी जो गलती की वो ये कि हमने दीन और दुनिया को अलग कर दिया. इट इज नॉट अ सेपरेट थिंग. दीन इज इन मी एंड आई एम इन दुनिया. दीन इज इन मी एंड आई एम इन दुनिया. सो दिस इज द फॉर्मूला, राइट? तो ये अलग चीजें नहीं है. ओके, does that answer your question? Yeah, please. No, it's okay. So when you are working very hard, but you are not getting results, then what you have to do? I just said that. So when you are working hard for yourself and you don't get result, you are sad. But when you are working hard for the pleasure of Allah and you don't get result, you are not sad. Because it is pleasure of Allah that you are working for. It is not the result that you are working for. It is the pleasure of Allah that the result is just the byproduct of it, right? Whether you get the result or not, you keep working hard for it. Because at the end, you have to get the pleasure of Allah. But when you change the direction and you want the result and not the pleasure of Allah, then you are sad and you said, "Ab छोड़ो, अब नहीं करना काम." But irrespective of the fact that you don't have the result, but you want the pleasure of Allah, तो पूरी जिंदगी आप मेहनत करते रहेंगे. अगर रिजल्ट ना भी मिले तो मेहनत करते रहेंगे क्योंकि you want the pleasure of Allah. And pleasure of Allah आखिरी, even when you are on the deathbed, तब तक भी श्योर नहीं होंगे कि whether I have got the pleasure of Allah or not. whether अल्लाह मुझसे राजी है कि नहीं, वो तभी पता चल सकता है जब हम इस दुनिया से जा चुके हैं. So our goal is GC, God conscious, Allah conscious. Every second of our life, I drink water for Allah, I talk to you for Allah, I pick up a call for Allah, I sleep for Allah, I walk for Allah, I talk for Allah, I wake up for Allah, I eat for Allah, I serve for Allah, I read for Allah. Everything for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah. Thank you. This side. Walaikum assalam. Question is that the lifespan of the person, Allah subhanahu wa ta'ala gives the person n number of opportunities. But due to some ability, the person doesn't take the opportunity. Like he's confused like what is it the right time or he needs that opportunity. So my question is that
when the person should, how a person can understand that this is the right time to act on the opportunity. You should take it. That's a difficult question, but let me think and answer, because जवाब देना इस जिम्मेदारी है, जो मैं बोलूँगा वो करेंगी. So can you repeat your question? Meanwhile, let me think about the answer. Yeah, repeat your question. Please repeat your question. My question is that Allah gives a lot of opportunities to that person, but due to some ambiguities and some confusions, person is not able to understand that this is the right time to act on it, or just to grab the opportunity. Okay. So how can we analyze it? How can we analyze it? This is the right time. We have to take the opportunity. Okay. So opportunity is like a closing door, and there's this famous quote. So opportunity is like a closing door, which once closes, you have to wait for the door to open once again. So the moment you get an opportunity, you should of course grab it, but at the same time, Allah के रसूल ने हमें इस्तिखारा दिया है. अल्लाह के रसूल ने जिसमें रास्ते बताए हैं कि हाउ वी शुड बी श्योर कि अल्लाह की इसमें रजा है या नहीं. अब इस्तिखारा करें, हम पता करें कि अल्लाह की रजा इसमें है कि नहीं. शुड वी गो अहेड विद इट और शुड वी नॉट गो अहेड विद इट. एंड इसका आसान तरीका ये है कि हम अल्लाह को अपना दोस्त बना लें. अल्लाह इज योर फ्रेंड. अल्लाह सेंड्स यू मैसेजेस, अल्लाह सेंड्स यू सिग्नल्स. सो प्रॉब्ली एक अपॉर्चुनिटी है एंड यू वांट टू ग्रैब इट बट यू मिस्ड इट. और एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए विच इज हार्मफुल फॉर यू, बट यू स्टिल ग्रैब इट. बट यू ग्रैब इट बीइंग फ्रेंड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो अल्लाह उसको लेस हार्मफुल बना देते हैं आपके लिए. अल्लाह उसको आपके लिए उसमें से हार्मफुल जो एस्पेक्ट्स है निकाल देते हैं आपके. सो व्हेन यू मेक अल्लाह योर फ्रेंड, थिंग्स बिकम इजी इंशाअल्लाह. और इस्तिखारा करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से पूछें. अल्लाह गिव्स यू सिग्नल्स एंड अल्लाह अपने नेक बंदों से बात भी करता है. यू डोंट हियर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बट देयर आर सिग्नल्स एंड देयर आर वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला. और अल्लाह से आप कनेक्शन करें. यू शुड हैव अ कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला. And at this age, I think namaz is the least that he can do. Of course, is the least, but उसके साथ थोड़ा जिक्र करें, थोड़ा सा जिक्र. Like after every namaz, remember Allah Subhanahu wa Taala. Like sit down and think about Allah Subhanahu wa Taala. That how great is Allah. It's an amazing thing that I'm giving you. It's a gift. You can take it as a gift. It's just 5 minutes. Don't do it extra because you are a student right now. But after every namaz, don't hurry, don't rush with your namaz. I've seen people doing Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamu alaikum. Okay, let's go. Namaz is not that. Namaz is when you have gone to Allah subhanahu wa ta'ala. You submit yourself to Allah subhanahu wa ta'ala. So once you're done with your namaz, just quietly sit down and think that Allah ने कितनी मोहब्बत की है आपसे. And this is the love of Allah is your topic that I'm giving you. The love of Allah. And keep thinking on it and keep building upon it. The love of Allah, the love of Allah, the love of Allah. कि अल्लाह ने कितनी मोहब्बत दी है मुझे. And then you will see the moment the thoughts keep building, you will realize कि अल्लाह ने कितनी मोहब्बत की है आपसे. अल्लाह ने क्या क्या दिया है आपको. अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है आपसे. और 5 minutes is sufficient. So इससे क्या होगा कि अल्लाह से कनेक्शन बनेगा आपका. And then you talk to Allah subhanahu wa ta'ala. Ask Allah subhanahu wa ta'ala कि अल्लाह मुझसे बात करो. अल्लाह send me signals. अल्लाह जब when Allah send you signals, it's a beautiful feeling. It's a beautiful feeling. It's a very beautiful feeling when Allah sends you signals and when Allah communicates with you in different ways. So you should aim towards that. If we need to talk to Allah subhanahu wa ta'ala, we need to Allah के रसूल ने बताया भी कि नमाज ऐसा पढ़ो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, कि तुम अल्लाह को देख रहे हो. और ऐसा ना हो तो ऐसा पढ़ो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है ना. तो एटलीस्ट हम इस लेवल पे तो शुरू कर सकते हैं कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है. एंड देन वी कैन गो टू अ लेवल जब अल्लाह को देख सकते हैं. तो अल्लाह के रसूल ने कहा नमाज ऐसा पढ़ो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, मतलब ये हो सकता है. वी कैन फील अल्लाह, राइट. अल्लाह के रसूल ने कह दिया तो हम लेट्स एम फॉर दैट कि हम नमाज ऐसा पढ़े कि हम अल्लाह को देख सकते हैं, है ना, इंशाअल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर. वालेकुम अस्सलाम. You said that when you were 18, you had your 10 years. So actually, I wanted to ask you about the turning point which led to your hard work now on. So what was the situation or the thoughts that you had that made you leave the hard work? Okay, very good question, inshallah. So the turning point is still my turning point actually, and it has not turned yet. So. The path is still a long way, but Yeah. No. I get your answer, but that's my answer.
So it's still that point. I mean, I'm still stuck to that turning point. It is not that कि वो turning point था मेरा, वो आज भी turning point है मेरा, ठीक है? और वो turning point ये है कि the sight of poverty is unbearable to me. मुझसे गरीबी देखी नहीं जाती है. I cannot see poverty. I cannot see poor people. I cannot see them. I genuinely cannot afford to see them. So when I see somebody in Delhi 7 डिग्री सेल्सियस में, 6 डिग्री सेल्सियस में रात को 2 बजे सड़क पे सो रहा है बिना कंबल के, और मैं अपनी गाड़ी में दिल्ली में रात में दोस्तों के साथ एक बार रात को निकला हूँ, चलो आज रात में घूमते हैं, दिल्ली देखते हैं, इंडिया गेट जाते हैं, और कल तो संडे है आराम से घूमते हैं, और मैं घूम रहा हूँ और मैं देखा I see somebody रात को 2 बजे and I'm with all my jackets and muffler and all my caps and gloves on, in my car the heater is on also, and I see somebody lying on the street sleeping without a blanket. What do? I immediately, जैसे नजर पड़ता है, what I do immediately is I look away with the fear कि अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया, तो अल्लाह ने देखा ही नहीं था, अल्लाह बस नजर पड़ गई थी वो तो. So this is the fear that I have in me, and this is the pain that I have with me कि I cannot see poverty, I cannot see poverty, I cannot see poverty. मुझसे गरीबी नहीं देखी जाती. I cannot see poverty. मुझसे गुर्बत नहीं देखी जाती. गुर्बत एक अलग चीज है, और गुर्बत में परेशान होना एक अलग चीज है, और जिस तरह की जिंदगी लोग काट रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने भी गुर्बत देखी. मैं गुर्बत में गलाजत नहीं थी जो आज मुसलमान की गुर्बत में गलाजत है. आई होप यू अग्री विथ मी भाई. अल्लाह के रसूल की गुर्बत में और सहाबियों की गुर्बत में गलाजत नहीं थी कि नापाकी में सो रहे हैं, गंदगी में सो रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं. तो the turning point of my life is that I walk out of the masjid with my father, who was also a rickshaw puller at one point of time in his life, and a waiter at a restaurant, but he is no more. He is no more. Alhamdulillah, he is a well-established businessman. So I walk out of the masjid on the day of Eid, all well dressed with my father, a 7 years old or 8 years old Wali Rahmani, and then I see a 7 years old or 8 years old begging, and I ask my question that why am I not begging and why is he not in my position? Okay, so what do we do to change that position? Either I go there and he comes here, or either we are equals. Both of us should beg, or both of us should leave the masjid in our new clothes. That was my turning point. So, and that is still my turning point. So you get the answer, right? That is still my turning point. I still cannot bear to see the sight of poverty. That's it. Take my email ID. Walaikum assalam. Sometimes due to failure we call distractions and we get like distracted from our goals. So how to get focused? Like we lose our focus sometimes due to some issues. And so how to gain that focus again? You have the answer within your question. I mean, nobody can be perfect throughout the life. So there are ups and downs, ups and downs. Iman में भी ups and downs होता है. Nobody can be like continuously ऐसा कि नमाज में खुशू continuous नहीं हो सकती. अल्लाह से मोहब्बत continuous एक level पे नहीं हो सकती. Sometimes you are high, sometimes you are low. But the very fact that you know that you lose your focus is your answer. So the moment you know that you've lost your focus, you're conscious about the fact, so get back to where you were. Start thinking, start pondering, start working towards where you were. Right? Okay. I think we can take one last question. Right? Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, your journey is a true inspiration for us, at least for me. So, sir, in your journey, you may have faced some problems. Sir, how do you overcome it? Oh, yeah. I'm still facing a lot of problems. Yeah. So, it is not an easy life. To be very honest, and you are youngsters, and that is why I'm letting you know. It is not an easy life that I am living, and this is the life that will. So I call myself a social entrepreneur. Right? So who is a social entrepreneur?
So what I am doing is a business basically. What I am doing is a business. Okay guys? But who benefits in this business? It is the society that benefits in this business. Right? And who incurs all the losses? It is the entrepreneur who incurs all the losses in this dunya. So I am prepared for this loss. I am prepared for all the ups and downs. So, to be very honest, after my marriage, after 1.5 years, I took my wife out for an outing. Oh, that's a sad story, right? Yeah, that's a sad story. So, this is the life that I am living. There is no entertainment in it. There is no fun in it. इसमें सिर्फ मेहनत है, सिर्फ मेहनत और सिर्फ मेहनत है. And who am I doing it for? For Allah subhanahu wa ta'ala. ताकि जिस हम हालात में आज हम हैं, इस हालात से बाहर निकल सके. Somebody has to stand up. And it is you who should stand up and all of you should stand up. और अहद करेंगे कि जितनी मुश्किलात आएंगे, हम अल्लाह से दुआ करेंगे उन मुश्किलात को दूर करने के लिए. और मुश्किलात में एक सुकून भी है एक्चुअली, पता है आपको? तकलीफ में एक सुकून भी है, जब तकलीफ अल्लाह के लिए हो, एक सुकून भी है. बिकॉज यू नो दिस ट्रायल्स एंड दिस हार्डशिप्स इज फॉर अल्लाह सुब्हान ताला. और कुरान की आयत भी है ना, नो सोल इज बर्डनड मोर देन इट कैन बेयर. राइट? तो जिसकी जितनी भी क्षमता है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, अल्लाह उस पर उतना ही बोझ देता है. अल्लाह इज द मोस्ट जस्ट. अल्लाह की जस्टिस सिस्टम वर्क्स लाइक दिस दैट अल्लाह विल नॉट बर्डन यू विद more than what you can bear. Right? So you know the fact in your hardship, in your heart, that this hardship is a trial for Allah subhanahu wa ta'ala. This hardship is from Allah subhanahu wa ta'ala. The very fact that this hardship is from Allah subhanahu wa ta'ala ने आपको दिल में सुकून दे दिया. That Allah is testing me and I need to pass this test. Right? I don't know, in this test I will not leave the rope of Allah subhanahu wa ta'ala inshallah. ठीक है? जज़ाकुमुल्लाह खैरन. अस्सलामु अलैकुम. Last question, ठीक है, last एकदम. I have to go somewhere else from here. Walaikum salam. The question is about me, but my parents wanted me a doctor or something else. I know that I would be go in that direct path, but I'm not that good at studies. What would I do for that? Study for your parents, and when the time comes, do YouTubing for yourself. Now you don't have the time for yourself. You cannot decide for yourself, right? Let the world see what kind of surgery you do. We've never seen a surgery on YouTube, right? आँख की सर्जरी यूट्यूब पे वीडियो बना के डालिए, है ना? लिवर की सर्जरी हो रही है, किडनी की सर्जरी हो रही है. ये सारे वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे आपके इंशाल्लाह. ठीक है? Thank you, sir. Thank you so much. One last thing I'll just add on before I leave. So after listening to my speech, all of you, and it is important that I put this disclaimer with what I have everything that I've spoken. What you have seen on the stage is what I have shown you. What you have not seen is what I have hidden from you. All of us are sinners, and may Allah forgive our sins. So I should never be an idol for you. The only idol that we have in our life is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Right? Inshallah.